once we had New Zealand, Australia out of the way, whatever happened, it did not matter to me. It was like Pakistan is now on the cricketing map. That's it. Welcome to the 41st episode of the King Pair podcast. This one is a very special one because we sit with two women who put Pakistan cricket on the world map. This is the story of Shaiza Khan and Kiran Baluch, who 20 years earlier, exactly today on the 15th of March 2004, set 3 records that still stand. That was very poetic. So there are 3 records that were set on this day, which stand to this day. It was the highest first wicket partnership of 241 runs between Kiran Baluch and Sajida Khan. The highest score ever by any woman in a test match of 242 runs and 13 wickets by the captain herself, Shaiza Khan. Also in this podcast, we talk about how they came to forming the team, their experiences traveling all over the world, playing cricket, and then of course playing the World Cup and all the issues that came post the test match as well. Kumail, do you want to share your favorite moment from this podcast? Yeah, this was a destructive one, यानी कि किसी का नाम उन्होंने नहीं छोड़ा. My favorite one was when they call out Ramiz Raja for his blatant, for lack of better words, chauvinism, where purportedly he stopped an umpire from performing their duty in a match where Shaiza and Kiran were playing. Stick to the episode to watch and understand more. Ragam, what was yours? My favorite moment was the conversation between Shaiza Khan and Majid Khan in his office. She said some very harsh words, but very rightly so, and you can find out later in the episode what happened and what was said. Enjoy the episode. एक obvious सवाल जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं वो यही है कि how was that test, and maybe then we can come back from it into how the team was built and how you guys got into it. But what really happened? I think I'll let Kiran start because she got a world record before I did. Yeah, sure. Yeah. Thank you. It was, we were very nervous for the test because it was the first women's test match being held on the Pakistani soil. And we were excited at the same time. हमें पता था कि बहुत से लोगों की नजरें होंगी and we'd be under the scrutiny. And especially Pakistan cricket board, वहाँ पर national stadium में test खेला जा रहा है. They were our biggest, जिसे कहते हैं ना, critics and जो हमारी जो struggle हमारी women cricketers की initially जो रही है, it has only been against PCB and जिसे कहते हैं ना, ruled by the PCB. तो हम लोग बड़े nervous थे. But anyhow, West Indies की team भी थी, they were a good side. So it was one that test is the most memorable match of my life, obviously, after the first test match and first one day के बाद. And we only went there to just stick on the wicket for 4 days and tell them that women can play a 4-day test match. And वहाँ पर obviously media भी काफी था and पुराने test cricketers भी काफी थे. हमारे जो supporters थे like Allah Bakshe Professor Anita Ghulam Ali, who was our patron-in-chief, Arif Ali Khan Abbasi Saab, and so many other people who were coming in to see कि भी test match की बातें करते हैं क्या women's test match. So we were told to go in and enjoy our batting by the captain and the coach. कि तुम लोग जाओ and just stick on the wicket. Me and Sajda Shah. I would like to break in here. When I won the toss, हमको था कि हम लोग के साथ experience हो गया था with New Zealand and Australia with 400 runs on the board, 500 runs on the board. So I was like कि हम batting करते थे पहले ताकि at least हमको 400 run नहीं पड़ेंगे and we'll be a little more comfortable. So I decided, irrespective what the wicket was like and irrespective of what the result would be, we decided to bat. And when Kiran went into bat, the first 2-3 overs were maiden. So वहाँ पे, I mean, all these people, the crowd was sitting and the big top journalists were there. Ali Sudeem साहब वगैरह, नेशन वगैरह पे थे सब. And they were like, लो आ गए ये लोग खेलने. ये तो एक दिन लास्ट नहीं करेंगे ये वो. I just left and I went into the dressing room. I couldn't watch after 2-3 overs. Wow. So
उसके बाद एकदम से जोर से आवाज आई तो मैंने क्या हुआ है, जैसे चौका पड़ा है। मैंने ओ किसने मारा गया, किरण ने कहते मैडम जा रहे हैं ना चौका किरण ने मारा है। फिर एकदम से बाय बाय द टाइम आई कुड कम आउट फिर से शोर आवाज आई, फिर मैंने क्या हुआ, चौका पड़ा है। दैट्स व्हेन आई वेंट एंड वॉच द मैच। नाउ शी कैन कंटिन्यू व्हाट हैपेंड आउट देयर। We were just like मेरी और साजिदा का यही था कि हम जाएंगे और हमसे we will just make sure कि as long as we both can stay on the wicket with each other, and she was like both calm and composed and she played a very good innings. Unfortunately उसके 98 पे she got out. But I still remember each and every shot and each and every जिसे कहते हैं ना till the lunch time and मेरा सिर्फ एक ही था कि I love to bat and I just need to show them how I can bat. And end of the day I was 138 not out. And then we knew कि जी इंडिया का मिताली राज का 214 है, तो एक दो तरफ से कान में आवाज आई कि जिस तरह से तुम बैट कर रही हो you can do it वाली बात ना वो थी दिमाग में। But I tried to stay calm the whole night कि भाई मैंने उसका नहीं सोचना, I just need to focus on no, you didn't stay calm all night. अच्छा वो I don't know what happened. अच्छा वो मैं जानना चाहता हूँ, एक बड़ी मशहूर क्रिकेट की कहानी है कि जी जब 400 जब मारे थे ब्रायन लारा ने, तो उससे पहली रात आई थिंक इयन बिशप और समवन वॉकड अप टू हिम एंड ही वाज प्लेइंग गोल्फ और समथिंग, बट आई एम श्योर ये जो बात है कि कान में लोग बातें डालते हैं एंड यू गाइस हैड अ चिप ऑन योर शोल्डर एज वेल कि जी इतने लोग देखने आए हैं, इतनी ज़्यादा बातें की हैं। आई मीन वेस्ट इंडीज़ से बड़ा हरीफ आप लोगों का स्टैंड्स में और वो VIP बॉक्सेस में और मीडिया बॉक्सेस में बैठे हुए थे, तो व्हाट गोज़ ऑन between those 2 days, यानी कि उस रात को क्या सोचा जा रहा था पहली रात के बाद when you were on 138 and you had to go out to bat? I was just thinking that I just need to carry on जिस तरह मैंने अभी बैटिंग की है, like obviously the coach and the team and the captain they were like very encouraging कि भाई you did a बहुत अच्छी innings खेली and just keep on with your temperament and you can do it and 214 जो है it's not far off 138 हो गए तो वो था दिमाग में, but I was like कि भाई ज़्यादा टेंशन ले रही तो वही आपकी डाउनफॉल ना हो जाए, but I was like I just want to show them how long and how I can bat. Next day भी obviously nervous तो थे. And the second day we went on तो वो साजिदा पहली डे पे आउट हो चुकी थी, तो we had the night watchman in. तो वो उसके बाद when we started the innings तो दूसरी उसमें तो वो जो खुर्शीद थी वो आउट हुई, फिर 1 down 2 down 3 down करते करते and Shaiza who was I think now number 5 or 6 पे थी Shaiza, so she was out there and I think I was batting on 165 उस पे मैं थी and I was like standing at the non-strikers end, so I was like you have to stay here. She's her exact words were तुझे दोस्ती की कसम है. That's what I did. That's what I told her कि तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुमने आउट नहीं होना. She said no I am here, तुम आराम से बैटिंग करो, don't take my attention, मैं कहीं नहीं जा रही. And I will run towards the danger end, you take it easy, you stick out. So then I got to my nervous 190s. That went on for a very long time. वो जिसे कह रहे हैं, that was the endless part of the innings which I still remember. वो runs ही नहीं होते थे उसपे. And finally 200. And then after 200 वो था कि भाई 14 runs needed, 15 more runs and उसके बाद 214 पे पहुंच गई and then I was on the strike. She just came and told me just hit and run. तुम बस भागो and I'll make it. And then 214 के बाद मैंने भाग के जिसे कहते हैं ना went for it, 215 हुए and शुक्र किया, सजदा किया, अल्लाह का शुक्र किया मैंने. And then उसके बाद I think unfortunately we had 95 runs. 95 runs partnership we had. And उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही Shaiza got out. So जाते जाते she told me that I will not declare the innings, take the world record away from the world. Bat for as long as तुम 4 दिन बैट करती रहोगी, मैं नहीं हटाऊंगी, तुम बैटिंग करो. So, but unfortunately, I got out on 242. But nonetheless, it was a still stand. Not bad. वो 95 run stand भी वैसे एक record है. It's number 7, which is still pretty decent. Like it's in the top 10 of 6th wicket partnerships. I want to know a bit more about that innings. क्योंकि एक 200 मारना टेस्ट मैच में स्पेशली एक बहुत मुश्किल काम होता है. How did you, while you were on the crease, phase out each part of your innings? What was the most difficult part of it? Was it just in the 90s या कोई specific time था? Because I'm sure the West Indies team was also very brilliant. What part did you find the most difficult to get through? The most difficult was the 190s. When I got stuck in my 190s, that was the most difficult because like 50, मैंने पहले I had
I had scored a 50 against Sri Lanka in the first test. So 50 हुआ तो it was like okay, फिर 100 हुआ. Obviously, it was a big achievement. But I was just मेरी अल्लाह की तरफ से उस वक्त ऐसी एक जिसे कहते हैं ना आपकी zoning हो गई थी कि I was playing ball to ball. I was not looking at the score. मेरा focus ये था कि मैंने अपनी wicket किसी को देनी नहीं है. And I think and a lot of credit. Obviously अल्लाह ने करवाया है. Even मेरे पे कोई credit नहीं है. अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया हुआ है, ये honor दिया है मुझे. But about हमारे जो कोच थे महमूद रशीद साहब, उनकी बहुत इसमें वो थी कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच से पहले हमको, मुझे, साजदा को, सबको, इवन सारी टीम को, जिस तरह से उन्होंने हमारी वो ट्यूनिंग की थी कि भाई अब टेस्ट मैच है ना, वनडे और टी उससे बाहर आ जाओ, आप इस पे आ जाए. But on the eve of the match, Mahmood Rashid, our coach, he took us to the National Stadium. उस पिच पे खड़ा करके विकेट पकड़ा के सारी शॉट्स खिलवाई थी, just in the air, you know. करके तो she had good vision around the ground. Nice. So I think that also helped. Yeah, me and Sajda and the openers, हमको उन्होंने यही कहा था कि just take one wicket and just imagine that they're bowling to you and just play the shots along the ground. So we did that for like an hour or so, and then you know. Just एक दिन पहले टेस्ट मैच से. अच्छा, bowling में क्या strategy थी when you guys then came out to bowl? Shaiza, what was on your mind as a captain? What were things that you were considering? अब you want to blow my own trumpet, so I'll do that. नहीं, please Yes, do. please. आपका भी एक record है जिसकी हम बात करना चाहते हैं. देखिए, I had confidence in myself. I knew I was a good bowler, and I was going to be unplayable. I knew that because they were not. मैंने उनको watch किया हुआ था पहले कि spinning वगैरह जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते. That's most leggies if you think about it. Yeah. So when we went out to bat, they were exhausted. They've been out. I mean, when they went out to bat, they were exhausted. They've been out till a full day till tea when I declared. And उसके बाद जब आया तो मैंने एक दो fast bowlers कराए, एक दो overs. But I could see that they were jittery, and that's when I took over as bowling for bowling. I think I took 3 or 4 wickets that evening between tea and the end of the day's play. Yeah. So I don't know what happened. Allah का करम है कि I got through with them there and then before the end of the day's play. The next day again I was able to break through. So I was getting with every wicket I was getting encouraged, and the team was also now coming up a bit mentally also कि भाई हमने इतने runs मार लिए हैं और अब wickets भी गिर रही हैं, so we could see the game to be won, to be there to be won. Yeah. So I really can't explain as that because it was just happening. I mean, I knew this was my chance because everybody was. I had a lot of people against me, particularly myself. कि they wanted to see my downfall, and they were always like, "कि she's financing it because she's got the money. That's why she's playing." I had to prove a point. It's not the money we're talking about here. Yeah. I know I have the talent, but I had a bigger thing to go for it and prove myself that I'm not just there to have fun. Yeah, 7 wickets isn't a bad statement to make at all. मेरे ख्याल से I think it doesn't get better than that. I want to talk about your decision to enforce the follow-on in that match. ज़ाहिर है follow-on जब enforce किया तो West Indies had a pretty strong fight back. उन्होंने भी तकरीबन 440 लगाए. How do you think, like, how were you feeling during that entire innings? What was the plan? What do you think happened? Very disappointed. Because Mr. Ramiz Raja, I have no hesitation. We'll come back to him. Please do. Yes, please do. We must. हमारा वो umpire था Riazuddin, he was the ICC panel umpire. He was told that make sure that these girls don't win. अच्छा. Wow. That is there. Wow. I gave the statements there and then. I would have had 17 wickets. Wow. Without exaggeration. People who were there, if you ask the old journalists वगैरह जो भी थे उस time पे, I can give you their names. They were decision इतने बड़े stumping थे which they did not give. And I mean आप खुद ही देखें कि they are unplayable at that point, and I ripped through their batting, and next day they आके again I ripped through them. उसके बाद dismissal end की नहीं हो रहा. तो वो मेन बैट्समैन निकल गए शुरू के एंड के जो बैट्समैन है वो आउट नहीं हो रहे हैं. तो आई मीन उसको देन आई मीन लाइक हमको तो एक दो दिन पहले कह दिया था कि आप इंटरव्यू दे रहे कि यू वन द मैच वी विल प्ले इट. आई डिड नॉट गिव दोस इंटरव्यूज बट वी वर 100% श्योर दैट वी वर गोइंग टू विन द गेम बट दे वर टोल्ड दैट इफ दीस गर्ल्स विन द गेम दे विल मेक अ स्टेटमेंट. तो वो टेस्ट खेलने नहीं दे रहे थे स्टार्ट में. बिल्कुल
तकरीबन sneaked into the stadium to play the match. Yeah, absolutely. And उन्होंने तो लगा दी ना, उन्होंने तो बोर्ड पे लगाया था सिंध वर्सेस वेस्ट इंडीज, रात को हमने प्रिंट करा के उसको टेस्ट किया था, और जब मैच शुरू हुआ when the cameras were on, that's when we put the test. The world was acknowledging it that it is a test match. It's in the wisdom and everybody knows that. Yeah. But you know. Yeah, I think अब वो बात छिड़ी गई है. We do really want to get into the build-up, but also Ramiz Raja's role. Like, what was his problem? You know, yeah. It was not आप खुल के बोल सकते हैं. It was not just Ramiz Raja. Yeah. Like, we can name so many, like the old Sure. cricketers like Hanif Mohammad, Fazal Mohammad, Sadiq Mohammad, Fazal Mahmood, and so many others. Like, you know, just senior थे, they were very sympathetic and very helpful for like even हमारी जब pitch, Shaiza had a pitch made in her factory for women's, क्योंकि हमको ground ही देते थे PC, like ₹200, 500 वगैरह सब they were all Majid Khan and all, they were all part of this clan who were against us like anything. Like women's cricket का नाम सुन के they would literally get a heart attack. And seriously, it was not a PCB's policy. PCB की policy should have been the guardian of cricket. ठीक है, they should have been encouraged. अगर कोई बच्चा सड़क पे भी खेल रहा है ना, so they should have been a guardian of those people, right? But they were the biggest obstacles we had, and it was personal grudges. ये इनके complexes थे, या whatever, I don't know, they know better. But in the end, Alhamdulillah, Allah gave us izzat and we came out winners. And we came out last test match, last series. So it was. We got something that they couldn't take away from us. Ever. Yeah, and it's still there, still stands. Yeah. जी बिल्कुल. और मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच में थोड़ा वक्त ज़्यादा 5-day टेस्ट मैच होता तो ये जीता भी जा सकता था. विक्ट्री वाज ऑन द कार्ड. हाँ वैसे तो अगर वैसे तो 10 दिन भी चलता तो कुछ नहीं होता. Yeah. So actually, on that note, you mentioned Hanif Mohammad. He was even there to watch the test match as well. So, Kiran, आपने तो जी आफ्टर माय एक दिन मैं उनके हम स्टेडियम की प्रैक्टिस करके निकले थे. हनीफ मोहम्मद साहब गोइंग, वो आए हुए थे तो वो जा रहे थे अपनी गाड़ी में. सो ही कॉल्ड मी, तो ही सेड कि ये मेरी गाड़ी है. मैं तकती उस वक्त नई एक सिविक ली थी, तो मैं दिखाया, उन्होंने कहा देखो मैंने नई गाड़ी ली है. तो मैंने कहा सर बहुत मुबारक हो. कहते हैं इसकी नंबर प्लेट देखो, तो उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसका था. कहता है ये देखा है, कहता तुमने भी करना है इंशाल्लाह. एंड आई वाज लाइक, यू नो, हम लोग उस वक्त के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बड़ी बात है ये तो, और जी हनीफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं. तो ही वाज वेरी एनकरेजिंग, शुरू से बहुत एनकरेज करते थे. फिर जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, ही वाज देयर एट द स्टेडियम. आई स्टिल हैव ₹1,000 नोट by him as a gift to me. ये तुम्हारा इनाम है. And I asked him to please sir sign it for me. कहते नहीं, now you are a world record holder, now you will sign it and frame it and tell them it was from me. So I still have it signed. I signed it in front of him over there. So he was very encouraging. Even Sadiq Mohammad, they were all very encouraging to all the girls. जब उनको बुलाया सर नेट्स पे आ जाए, सर कोई इवेंट है आप आ जाए, they always used to show very decent and very encouraging. Beautiful. Yeah. Shaiza, there is a lot of build-up to this test series. In fact, the first test match that you guys did play, उससे पहले भी बहुत build-up था, क्योंकि the odds were stacked against you. You funded a lot of these things by yourself. So take us, you know, people see women's cricket now, and we've talked to Alia Riaz, we've talked to Fatma Sana, and we've talked to other cricketers right now. And right now they're lucky that they still have some sort of a platform on which they play. Lekin what we want to know, and what we want people who are watching this eventually to understand, is कि इसमें कितनी मेहनत लगी और कितनी इसमें खून पसीना, क्योंकि we know that the PCB and everyone was against it, was against women playing a test match to begin with. So tell us a bit about that. Tell us a bit about what you had to do to get there. देखिए, my younger sister was not with us anymore. So we both had this dream. And when we were kids, we used to sign papers in the best cricketer ever born and all that. तो वो बहुत हमारी बचपन से ना एक obsession था. We used to play together all the time, both of us. And जब हम लोग इंग्लैंड जाते थे छुट्टियों वगैरह के लिए, when we were studying there, so we spent more times on the ground than in the classes. So you know, that was the only platform we had. So in 92 या 93 का World Cup था women's का, we were studying in Leeds. तो the heading में इनका कैंप लगा हुआ था इंग्लैंड का. So we were like selected to play, but we didn't have British nationality, so we were like obviously dropped. So हमको था कि हमने we wanted to make our name in the history
और पाकिस्तान में हमको दूर दूर तक कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था एंड वी वर किड्स आल्सो सो जितना हमारा विजन था उस वक्त बस इंटरनेशनल खेलना था तो खैर जब उन्होंने हमको रिफ्यूज किया तो उसके बाद हमको बस वो उन्होंने हमको फाइनल भी बुलाया कि अच्छा आओ हम लोग 88 हम लोग कर चुके थे अटेम्प्ट पर वो नहीं चला था वी गॉट अ लॉट ऑफ पीपल अगेंस्ट अस माय फादर सेड गो अवे कम बैक व्हेन दिस कंट्री इज रेडी फॉर यू तो हमने जब वो 92 93 का वर्ल्ड कप था तो उधर हम लोग गए तब तो उन्होंने डिनर पे बुलाया पर दे वर अवेयर ऑफ अस एंड आई requested them to come to the meeting and to be a member of Pakistan, you know, Pakistan should become the member by IWCC. उन्होंने कहा ठीक है तो एप्लीकेशन वगैरह की सारी मीटिंग चलती रही पूरी सबकी होती रही तो रात को डिनर था उधर रोज गार्डन में लॉर्ड्स पे उधर they announced कि we will now welcome Pakistan as in the IWCC fold and we will take it from there after the formalities are fulfilled. वो BBC पे रात को चला रही है my father was watching the TV. उधर सब कहा गया फोन देखो तो क्रिकेट खेलने भेजा कि पढ़ने भेजा तो वो चीजें थे थोड़ा सा वो डाई हो गया एग्जाम्स भी थे तो after a year or so I got a letter from IWCC and they said कि if you want to play the World Cup 93 का we have to be residents in the country for a year and then you can play. So I was doing my PhD at that time so my head of the department said कि what are you going to do Shaiza? I said well I can do my PhD even in a wheelchair but I can't play cricket later so I'm going. मैं तो पाकिस्तान लैंड करके I got a lot of sessions from my parents at that point yes but I had only 8 months to go and 1 year for the World Cup. Wow. तो फिर आके यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनानी शुरू किया आई गॉट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द रिटन नेशंस और ऐसा बना के जो भी उसकी थी फॉर्मेलिटीज वाज अ लॉन्ग टाइम देयर वाज स्टिल easier than to find a team then I had to find 11 girls who could play cricket अब वो मिल ही नहीं रही थी मैं हॉकी की पकड़ी जिससे पकड़ी तो करते कराते वो ठोका ठाकी करते करते हम एक पॉइंट पे पहुंच गए जब हमारा वो हुआ ना कि हमको ग्राउंड्स चाहिए खेलने के लिए तो then we went to the PCB उसमें आरिफ अली खान अब्बासी was there as the CEO उसने बड़े आराम से साइन कर दिया मिस्टर जसीम खान was the director they both very nicely signed free of charge whenever the ground is seats available for you हमने खेलना शुरू कर दिया वहाँ से थोड़ी लड़कियां भी आनी शुरू हो गई करते करते थोड़ा सा हमारा जब होल्ड हुआ तो उधर से वो माजिद खान साहब आ गए then we went to a nose dive but nevertheless we were still at it then we started playing at Jumkhana Karachi Khana KPI का ग्राउंड था या उधर हमने खेले जो भी हमको मिल जाता था तो हम लोग कर लेते थे अपना but Majid Khan was very what do you call conservative I would say chauvinist I would say yes why not so he was like women should stay in 4 walls and you know all that blah 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 हमारा तो टनल विजन था कि हमने तो इतना वो जाना है पहले Australia, New Zealand. Because we had played 3 one-days outside the country, then we qualified. So, उधर जाने के लिए हमने पूरा हश रखा हुआ था. अब लड़कियां भी हमारे पास ऐसी थी कि अगर मैं उनको अब देखो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी. वो जो है ना वो अगर बात करें pathetic. तो उसमें 3-4 होंगी हैंडफुल. खैर वो हर जगह तो समर्स नहीं थी विंटर्स चल रही थी they were all pre-scheduled so we went to Australia New Zealand जाने से 2-3 दिन पहले वो पाकिस्तान का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान was playing in Australia men's मैच हो रहा था तो उसपे they announced कि women's team is arriving अच्छा और हमारे सब मैच रखा हुआ था except for our parents and the girls nobody else knew that we were leaving because हमें था ये कुछ ना कुछ करेंगे PCB वाले हम खैर रोकने के लिए and we got the NOC from Professor Rita. She was the Minister of Sports and Culture at that point. So and tourism. So she gave us the NOC and we went to the airport. वहाँ पे तो हम लोग अपने plane clothes में गए थे. Our kit bags were in cartons. वैसे करके भी checked in like 4 लड़कियाँ एक दफा 5 एक दफा ऐसे हमने groups में check in किया. Cartons के साथ एक carton खुल गया. उस पे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम लिखा हुआ था तो हमको कस्टम ऑफिसर ने बुलाया शर्मीन को मुझे कि ये टीम जा रही है ऐसे कैसे हो सकता है वगैरह शोड इन द एनओसी वगैरह से नहीं हो सकता ऐसे आप तो आज ये करके भूल जाएंगे हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या ये द ब्रिंक ऑफ इट उसने कहा अच्छा बंद करो जाओ अच्छा सैल्यूट टू हिम आल्सो आपको ईसीएल वगैरह पे डाला हुआ था ये बात सच है उस वक्त अच्छा उस वक्त समझते कि हम ऐसे ही हैं अच्छा
I think उस वक्त they were the first team to go and represent Pakistan outside any women's team in any discipline. Even in Commonwealth or Olympics में कभी नहीं हुआ था पहले. So they never thought कि we will go. They thought हम यहाँ भी कर रहे हैं. लड़कियों का standard भी उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं करेंगी. और हमने बिल्कुल हश रखा हुआ था. Because you see, I got a letter from IWC in September. We were invited to play the World Cup, and in January we had to go to New Zealand. You see, so I had those 3-4 months where I had to finalize my team, select a team, and do all the works and sponsorship and whatever I could get. But I didn't get any sponsorship, unfortunately. So, but anyways, when we went to New Zealand, तो उसके बाद हम प्रेस रिलीज छोड़ के गए थे कि the women have already gone. उस वक्त यहाँ पे वो बेनजीर का वो हो गया था, टॉपल हो गई थी गवर्नमेंट आई थिंक. तो वो शेयर वगैरह ना कुछ जगह दिखाया था, बट पीपल इन पीसीबी टोल्ड देम कि भाई इनको आप स्पॉन्सर ना करें. तो खैर एनीवेज जब हम लोग जाने लगे तो वो सब यहाँ पे क्रिसमस टाइम हो गया. वीजास के बगैर we paid a fees for New Zealand. There's no New Zealand embassy in Pakistan. So we were paid to the British embassy. They were supposed to do it, and our passports were supposed to go to India. And we did not want that. So they जाएंगे तो कल जाएंगे क्रिसमस के. 7th 8th को हम लोग गए थे जंजीर की. तो we just took the girls. Australian visas लग गए थे. We took the girls and we went to Singapore. उन्होंने कहा आपको we will not let you go because you don't have the visas. अच्छा. So you have to go back to Pakistan. We called up New Zealand. We said we've told you our problem. We have paid the fees. ये receipts हमारी. तो कहते ठीक है we will try but we don't guarantee. Fine. So Singapore में हमने कहा you can't stop us. We've got the Australian visas. So we can go up to Australia. Yeah. So they said, okay, obviously they're going to stop us. उधर तक पहुंचे तो वहाँ तक जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, it's arranged. You can come. Then they talked to the authorities and we got on the plane. Then when we landed there, उन्होंने हमको पता नहीं घंटा कुछ बैठा के रखा जहाज में. Then our passports were stamped and then we were able to get off the plane. That was also the first time ever somebody has landed without the visa. The team. उनको जहाज ही बिठाए रखा है. Everybody has been offloaded. अब passports went down, visa लगा, फिर एक-एक करके हमको उतार के दे वेलकम. ये एक और रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से. But वो सच है ना, वो बस हम चलते चले गए ना. टनल विजन थी हमारी. Once we had New Zealand, Australia out of the way, whatever happened, it did not matter to me. It was like Pakistan is now on the cricketing map. That's it. The national anthem was played. That was done. You see, हमारे लिए खड़ा हुआ ना नेशनल एंथम, अल्लाह का शुक्र है. That's it. उसके बाद जब अब enthusiasm थोड़ा और बढ़ गया, एक experience टूर का हुआ ऐसा, तो we got more this thing into it. Then now that we are now qualified for the World Cup, who is going to stop? एक तो हमको पड़ा और वो भी इंडिया में, तो उस वक्त उस पे भी बैन लगा हुआ था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को नहीं जा रही थी. अपना रिसर्च करें आप. At that point of time, कारगिल भी चल रहा था I think. No players were going to India. There was a ban. तो उधर क्या कहते हैं हम लोगों ने फिर भी करते करते अल्लाह ने हमारी मदद की. टू बी ऑनेस्ट रास्ते हमारे खुलते चले गए. फिर जब वीजे का टाइम आया तो मिस्टर माजिद खान December of 5th. Even when the Karachi के grounds बहुत कम थे and Shaiza had called the Australian coach. That's also a record. कोच नहीं दे रहे थे. ये कोच हमारे साथ ये हुआ था कि even after coming back from New Zealand, एक तो we made a statement which obviously PCB was not very happy about. तो जो भी मेल क्रिकेटर्स यहाँ होते थे उनको कहते थे कि सर आप हमारी कोचिंग पकड़ लिया, सर आप कोच हैं, आप हमारी कोचिंग. सो वो हमें साफ कहते थे कि हमारी रोजी रोटी है. कभी हम अंपायरिंग कर रहे हैं, कभी हम बॉयज टीम के साथ हैं, कभी इधर हैं. हमने आपको ज्वाइन कर लिया, दे विल नॉट गिव अस एनी वर्क. तो वी कांट. हम छुप छुप के वो करते थे. सो देन शी गॉट कॉन्टैक्टेड. मैं कहा इनकी ऐसी की तैसी we will bring a woman coach to show that women are on that level. So that was another statement. So Australia came forward and they sponsored that coach. I mean her trip to Pakistan. यहाँ पे तो हमारे पास था boarding lodging, but she came and Majid Khan was there. I approached Majid Khan at that point and I said कि ये हमारी कोच भी अब आ रही है, ये सारे फ्लैटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, और हमको आप ग्राउंड दे दे बिकॉज अब शी इज कमिंग. सो वी नीड अ नाइस प्लेटफॉर्म टू शो दैट we are playing at a respectable platform, going for the World Cup. उसने तो मुझे कहा कि ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता. Believe me, when I was going out of the door, I said, you just lost a fan. And I walked out. And because you see, I mean, उसके पीछे थी शीरीन जावेद, एतजाज एहसन's wife, बुशरा एतजाज, all ribbon cutting aunties, nothing to do with cricket whatsoever. And वो अब उनको sponsorship चाहिए, services वगैरह की, वो सब चाहिए. तो
मुझे दुख इस बात का है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. I'm talking about all these ex-former cricketers. You know the feeling, and the other person also wants to have that feeling. Yes. And we want to be proud of it. Yes. So how can you become the biggest obstacle? I will never become an obstacle in front of a woman who wants to play cricket. Yes. Any girl. I will do anything I can to encourage her. ठीक है ना? तो वो तो ऐसे खड़े हो गए जैसे पता नहीं. And they sorry to cut you. And they very well knew that women's cricket and men's cricket stay independent. And PCB के constitution में women's cricket की ना कोई provision थी, कुछ भी नहीं था. They knew it very well. But still उन्होंने इतनी dirty की politics की कि while we were, because we needed the grounds, Judy Davis was coming, कराची में ना इतने parks हैं, उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं थे, and not safe for women. So that's why we shifted the camp to Lahore. क्योंकि काफी सारी लड़कियां हमारी जो सब आ भी गई थी वो गुजरांवाला वगैरह से थी, so very easier for us to manage them also. So we shifted the camp to Lahore कि जी वहाँ पर रेस कोर्स पार्क है, दूसरी जगहें हैं, तो हमारे लिए ट्रेनिंग आसान होगी. पीसीबी ने ग्राउंड्स बना कर दिए. The army stepped in. We were very grateful to them. उन्होंने Garrison School for Boys था, उसमें cemented pitch थी. We were like कि भाई any pitch would do. So they gave us कि जी boys school over होता है, उसके बाद you have the cemented pitch. वहाँ हम practice करते थे. सुबह हम रेस कोर्स पार्क जाके यूज्ड टू बी रन, जो रेस कोर्स वाला है वहां पर उनका जो पोलो ग्राउंड है, वहां पे हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी. एंड व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग ऑन, माजिद खान साहब एंड पीसीबी वाज कैंपेनिंग एंड प्रेस रिलीजेस जा रही है कि जी पीसीबी की वुमेन्स टीम जा रही है, पेप्सी भी स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक हमारे नाम पे सब स्पॉन्सरशिप अब सब हो गया. जी. एंड इवन एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट पाकिस्तान का जो टैलेंट है that was divided. कि अगर कोई अच्छी लड़की उस वक्त 97 का वर्ल्ड कप खेल के आगे जा सकती थी, so thanks to this PCB जो अब अलम बरदार है कि उन्होंने पाकिस्तान का टैलेंट भी वेस्ट किया, लड़कियों के ईयर्स भी वेस्ट किए, स्पॉन्सरशिप, और वो लाइक they used to write letters to the IWCC. PCB माजिद खान साहब के लेटर्स हैं, ये शीरीन जावेद वगैरह के सबके लेटर्स. IWCC आए दिन facts used to be coming in that they are contacting us, but IWCC का letter would go that our official members are PWCCA, which is a registered body, and we were recognized and approved by the PCB. इसके letters हैं कि PCB said कि भी we've got nothing by the governing board. By the governing board. उसके बाद तो ad hoc चल पड़ा था. और उसमें they could not change the structure during the ad hoc. उसके बावजूद ये illegally run कर रहे हैं अभी. Let me put it that way. It's not under them anymore. अभी इस ना वो हमने इनको challenge नहीं किया. बिकॉज हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गए वो हो गया, और फिर वो IWCC को भी उन्होंने घेरा. हमको लेटर IWCC जो रेजोल्यूशन थी ना उसमें था कि ऑल द एग्जिस्टिंग विमेन बॉडीज वुड गो फॉरवर्ड एंड बिकम पार्ट ऑफ द मेंस सेटअप, बिकॉज दे आर मर्जिंग नाउ. IWCC and ICC are merging, so their bodies would merge with ICC. We were the only body that did not merge with the PCB. बाकी सारी countries ने सारी women's and men's board they followed the merger rules and regulations except for PCB जहाँ पर जी वो cadet college की principal ले आए जिनको cricket की हिस्ट्री नहीं पता. We used to call it syllabus. So she was made the principal and she didn't know head or tails of cricket, and then there was so many like एक cricket setup बना दिया जिसका ना सर था ना पैर था. And I think जो नया cricket setup बनाया था, I think उसका एक ही मकसद था, to make sure that we don't ever play again. I think that was it. That was number 2. Number 1 maqsad was a lot of money was coming from ICC for women's cricket development in Pakistan. At that point, the figure was quoted was $20 million, which was for Sri Lanka, Asia for development. So they were getting about 8 million or something like that. So we voted for that. उसके बाद इनकी नीयत खराब हुई है. जब पैसा नहीं था, जब कुछ नहीं था, तो जब तो वो उसकी बेगम को प्लीज करे तो उसको बेगम को प्लीज करें, जब कोई क्रिकेट का नहीं था. बट जब ये पैसा आया ना उधर से कर शुरू हो गया असल मानों में. तो that was the main problem. But otherwise no regrets. मजा आया उनसे टाकरा लेने का, और उनसे टाकरा लिया तो फील्ड पे प्रूव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह. शायद अगर ये ना लेते ना तो हम भी इतनी जेस्ट के साथ आगे ना निकलते. तो फिर जब इन्होंने टीम बनाई उसमें से 8 लड़कियां हमारी थी. तो इन्होंने पहली टीम बनाई, 8 girls was from us, Kiran, my sister Sharmeen and I did not go. हम 3 नहीं गए, बाकी तो all my setup and I let them go because एक तो I know they were from humble background. क्योंकि कोई बन जाता, करियर बन जाता, whatever. Why should I stop them? So I released them of our
contracts with PWCCA. Yeah. We let them go. अच्छा. और PCB के साथ हमने तो ये किया जा सिमरन. जी ले अपनी जिंदगी. जी ले जिंदगी. और आज तक मूव करने के लिए ना वो प्रूव करने के लिए खेलते जा रहे हैं. वेरी गुड. हमारा काम हो रहा है. बिल्कुल. Pioneers, we are alhamdulillah pioneers. Yes. And they cannot change history. Yes. You see, so अल्लाह का शुक्र है अब वो जितना women's cricket हो रहा है हर जगह तो that's because of you. No, that is because of you. So हाँ just you were talking about just the significance के आपने वो pioneer किया आपने शर्मीन especially the role you played. Jodie Davis जो आपकी उस टाइम की I think coach थी also said even after a very unsuccessful World Cup experience that the fact that we needed these two sisters to be there for the 11 women out there to be playing for Pakistan. So I think that just goes to show the fact that you showed up at the World Cup, that you played was the real victory here. I have a couple of questions which I want to talk about. So during the West Indies test match, there was a point where you were thinking of walking off. Is that correct? That was in Sri Lanka. Achha. Okay. So can you talk about that? What was the incident? What happened? It was all umpiring, very bad umpiring, very biased umpiring. And then it was their first test match, it was our first test. We got the status together in 97 Calcutta. And went for the IWCC meeting. वहाँ पे भी ये आई थी शीरिन जावेद द्वारा ना cancel our membership. तो वहाँ पे then the full council voted for us. And we at that point I thought उस वक्त हम लोग थे एसोसिएट मेंबर्स और उसका होता था कि आप किसी वक्त मेंबरशिप 3 मंथ्स की होती है कैंसिल हो जाती है. फुल मेंबरशिप हुए तो वो आप then they have to give them notices and then there has to be a full council meeting and the next full council meeting would have been in 3 years time. अच्छा. तो उधर पे हमने डिसाइड किया कि इनको अभी पकड़ लेते हैं फुल काउंसिल को बैठी भी टेस्ट स्टेटस ले लो तो पीसीबी जो मर्जी करता रहे तो एटलीस्ट हमारी जगह पक्की हो जाएगी. उधर पे हमने लॉबी की ओवरनाइट तो वो दिन का था मीटिंग ओवरनाइट लॉबिंग वाला की श्रीलंका को साथ में लाया तो पकड़े टेस्ट स्टेटस ले लेते एक टेस्ट खेल लेते जो मर्जी हो जाए वो ठप्पा लग जाएगा एक तो ऊपर से हम कंसीड हो जाएंगे कि दे विल नॉट एबल टू कैंसिल मेंबरशिप. सो वी वर द फर्स्ट टू टीम टू गेट अ मेंबरशिप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स IWCC members. उससे पहले तो आई थिंक 5-7 साल का वेट था become the get the test status. So that was one thought behind it to seal our existence in Pakistan. And number 2 टेस्ट मैच तो हम लोग ऐसे एक तरीके से गए थे उसको इंडोर्स करने. अब वो उनकी एम्पायरिंग जो है ना उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया. We were not that bad at that point. वो भी हम लोग एक साथ ही आए थे पार से हम लोग. So that was very unfortunate कि हमारा पहला टेस्ट है and we have to come here and you know at least be fair वाली बात है. That's when I was like this is not happening. And how many decisions are you going to let go before you say enough is enough? Yeah. And just on that, so वो test status जरूर मिल गया, but of course there hasn't been test cricket since you guys played the test series. And in fact, Sri Lanka teams like Ireland haven't even gone ahead and played any test cricket since then. So why do you think that is? Because these two teams do have the resources and the lack of vision and they are fulfilling a commitment with the ICC कि we are encouraging women's cricket, but your cricket is test cricket. Yes. We have women, it's a sponsors hosting the teams for a longer period of time, and they're more into T20s and one days ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए. I don't know what even New Zealand doesn't play any test. They have refused to play any test. I think it's just England, Australia and now India and South Africa just played test match, so वो खेल रहे हैं. Otherwise women's cricket को देखिए ना वैसे women's cricket को अब ठीक है ना like right now women's cricket is getting a lot of kg जिस तरह से ये WPL start हुआ है, PSL का हमने सुना था start होने वाला है and so many other leagues दोबारा. Women's cricket is getting a lot of go but still not at the level of what we negotiated or we visioned in 2003 and 4 जब भी Majid का हो रहा था. Actually the IWCC women they sold themselves very cheaply. मेरे हिसाब से वो उस पर रिक्वायरमेंट थी कि ये जो है T20 जब भी आया था कि they want to take that into Olympics and Commonwealth. उधर तो जो है ना वो
men and women, they should have been under one federation in order to qualify for Olympics and that. तो vision वो थी. अगर ये जो IWC के officials थे, अगर ये अपने आप जो मैं इनको कहती थी, अपने आप को push करो, तो they will have to sit on the table with you. They sold themselves very cheaply to डर के मारे कि नहीं करने दो. तो उधर वो PCB के साथ भी लग गए, उधर भी लग गए, इधर भी लग गए कि negotiation हो जाए. अदरवाइज इनके पास बड़ा अच्छा चांस था कि जिस लेवल पे किया है इन्होंने ये इस लेवल पे करते थे. तो वो जब अपने आप का खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा. I'm sorry. आप देखेंगे PCB में भी I've heard the women who are running the affair, they've got nothing to do with cricket. They don't have a cricket. There's a badminton player, there's a hockey player, like very seriousness. So and secondly, इनका मुरीदगी में कैंप लगता है. Why not the Tabafi stadium? They're playing at the south end या कहीं इधर उधर खिला देते. When we were playing, we used to चाहे तौकीर साहब थे, चाहे शहरयार खान, like जितने भी हमारे अगेंस्ट थे, माजिद खान वगैरह, we made sure that both the series एंड वाली हमको अनफॉर्चुनेटली जब वो शहरयार खान साहब थे एंड मर्जर एंड बहुत ज्यादा इन्होंने वो खिचड़ी पका दी थी. सो वी हैड टू प्ले अ फ्यू मैचेस एट अस्कर अली शाह एंड देयर. अदरवाइज टेस्ट ओवर देयर वी मेड श्योर दैट आवर टीम्स वर स्टेइंग एट Sheraton. We made sure that we were like गवर्नर हाउस पे हमारा भी डिनर होगा, सब होगा. We made sure आपको खुद ही करना पड़ता है ना जब आपके पास विजन हो. You have to respect yourself basically. तो शहरयार खान ने कहा था आपको बाहर ग्राउंड दे देते. मैंने कहा आज हमने बाहर खेल लिया तो हम कभी अंदर नहीं आ सकेंगे. बिल्कुल. So we have to be inside and why not? We are Pakistanis. Yes. Why not? Yes. So we have more population than the men's. So we are overpowering and that's it. We have to play inside. We did that. Allah ka shukar. And I mean, Allah made things easier for us. Allah was on our side. Main thing is that. तो भी बेचारे सबको साइड पे होना पड़ा. इसमें the one thing that I'm noticing with you both is this amazing ability to lobby. Like एक तो है कि आप obviously there is passion to play cricket, there is great skill involved, but then there is also a lot of tact involved. तो वो help us understand कि किस तरह से लॉबिंग होती थी, यानी कि फॉर समवन हु इज ऑन द आउटसाइड किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती थी, क्या बात होती थी, हाउ डू यू अप्रोच डिफरेंट पीपल एंड व्हाट डू यू आस्क ऑफ देम. इन पाकिस्तान और नहीं, जैसे अभी आपने श्रीलंका की बात की या ऑस्ट्रेलिया की बात की, लाइक इवन द इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस यू वर मेकिंग, how did those go about? They were easy. They were sympathetic towards us. They knew we were trying very hard. They thought we were trying harder than we should have, but we didn't have time on our side because you see, we were Sharmeen and I was still at such a mature age. जब हमारे लोगों का करियर खत्म होने वाला होता है एक तरीके से, you don't start at that time, and we had to play cricket. तो उसके लिए we were like. We played most one-days international games than any other team in the world at that point between 97 and in 3 years time 2000. 3 years time. Wow. We had the most tours. अगर आप निकाल के देखें ना तो इंडिया ने तो शायद एक मैच भी नहीं खेला था during that time. So the time was running out for us, and plus because we were getting a lot of attention and rapport and whatever was coming towards us, so that got us keep going. एक के बाद एक, and other countries were also starving for cricket. Like Ireland वगैरह, श्रीलंका भी अभी नए आए थे, so they were not part of the whole scenario at that point. So we, I think, gave them an opportunity कि we are available for anybody to play. We made ourselves available. We even had 99 में we even had a try series going on with India, Sri Lanka and Pakistan. हमने try series करवा ली थी, हमने Asian Women's Cricket Council बना लिया था. So we were just like Shaiza, Sharmeen, Allah Bakshan का विजन ऐसा था कि they were जिसे कहते हैं ना full throttle going ahead कि भी मैचेस भी खेलो ये, and यहाँ पर जो चल रहा था पॉलिटिक्स उसको टोटल इग्नोर करके कि hurdles हैं, they will get us even further. जिसे कहते हैं ना they will only help us in going further वाले का विजन था. देखिए ना, हमने एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया था कि पीसीबी ने हमको हमारा काम नहीं करना, उसको हमने कर दिया साइड पे. If you're not taking money facilities from them, then do what you like. We are not answerable to you. ठीक है ना. तो हमने भी वो विजन ले लिया था. हमको ग्राउंड भी अपना मिल गया था, जैसे डार्क डिस्पोजल हमारा अपना ग्राउंड था, पिचेस भी थी, कोचेस भी हमारे अब आने लग गए थे बिकॉज वी वर पेइंग देम वेल, और वो हमारा एक अपना एक पैरेलल सिलसिला चल पड़ा था. तो वी टोटली इग्नोर्ड पीसीबी. तो उधर से इनको बेचारों को और मिस्टेक ज़्यादा लगती होंगी शायद, तो आई डोंट नो, बट उसी उसका उनका जो वो था ना चक्कर, वो हमने अपने दिमाग से निकाल दिया था. तो फिर हम लोग भी ओनली एमिंग टुवर्ड्स टूर्स and playing cricket and as much cricket as possible. So we kept going, but the women cricket of sides
internationally they were very sympathetic. And we had played a lot of cricket, I mean county cricket और club cricket वगैरह इंग्लैंड में काफी खेला हुआ था. Like हम लोग 81 से खेल रहे थे वहाँ. फिर यूनिवर्सिटी वगैरह सब. So we knew the setup personally. So that also helped. And the media, Pakistan में media was से कहते हैं ना, the media kept us going. They were very, से कहते हैं अब हम देखते हैं women's cricket का न्यूज़ वगैरह में हमारे टाइम पे there was like full throttle, like I don't think कि कोई हफ्ता में ऐसा पूरा हफ्ता गुजरता होगा जिस दिन हफ्ते में एक खबर women's cricket की हमारी नहीं आती थी. कुछ ना कुछ we were making, जिसे कहते हैं ना heads roll, making कुछ ना कुछ हमारी progress हो, loss हो, कोई प्लानिंग हो आगे की, किसी को विजिट कर लिया, किसी एक्स क्रिकेटर को बुला के कर लिया, ट्रायल्स अनाउंस कर दिए, कुछ ना कुछ लगा रहते थे. एक मूव हमने की थी which helped us a lot. That was कि जब हमको आरिफ अब्बासी ने ग्राउंड दिया था खेलने के लिए, तो फ्री ऑफ चार्ज एंड व्हाटएवर, तो हमने पहले सोचा कि इनको पकड़े, लड़कों की टीमें पकड़े, ये पकड़े, नहीं इससे वो काम नहीं बनेगा, जो हमको एक अवेयरनेस भी देनी थी. So we got hold of the press club की men's cricket team. So we had the journalists playing with us at the National Stadium twice a week. We got to know them personally, and they got to know us personally that they were enthusiastic and we wanted to play, and they got their thing कि हम National Stadium में खेल रहे हैं, है ना, मेन पिच पे. तो उधर से हमारी जो है ना वो नो हाउ एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस आ गई, एंड जो मैच होता था वो एक अखबार में खबर आ जाती थी कि कल भी क्रिकेट टीम के साथ मैच हुआ तो ये हुआ, हमारे नाम भी आ जाते थे, उनके भी आ जाते थे. So that took off a bit also. Yeah. So when we came on the international arena, they knew us personally, and they was like, "Arey Shaiza, chalo, hum apne saath hai." That's okay. Yeah, wonderful. So, I think we can talk a bit about you leaving cricket afterwards. It was a bit premature as well. तो क्या मसले उस वक्त पेश आए थे, एंड कौन इन्वॉल्व था? आई थिंक नेम्स वुड बी ग्रेट. कौन तंग कर रहा था? एंड Mr. Shahryar Khan, top of the list, guardian of women's cricket. He gave us a letter saying that PWCC will now roll over to PCB and we will be their members. मेरा ख्याल है आ गया था यहाँ पे भी ग्राउंड की तरह. They have their voodoo dolls. सब पता है उनको. What was I saying? Jardine of women's Yes. He gave us a letter that we will take you as the member of Pakistan Cricket Board as an associate member, and आप जाके वहाँ पे IWC की मीटिंग में वोट करने. हमने वोट किया. जो वोट करने के बाद 1-2 घंटे के बाद the head of the IWC, Krishnan Pirde, she said Shahryar Khan has withdrawn the letter. Withdrawn the letter, and I think the same day, the very next day, he announced Meera Philippus as the chairman of the women's board बन गया gate number 5 पे, and you know that. Nevertheless, that was 2003, 2004. We played in the National Stadium and got the world records. Yes. Yeah. उसके बाद अल्लाह का शुक्र है that happened. But जिस दिन हमारा वो टेस्ट खत्म हुआ था, हमारा जब टेस्ट मैच खत्म हुआ तो उसके बाद we had a few days in between the one day series. So me and Shaiza were sitting in our cricket office, and obviously a lot of preparations for the one days and all that. And I personally, I was on a very high. कि world record हो गया मेरा, like something I had never even imagined, dream तो कुछ दूर की बात होती है. तो I was sitting there, and Shaiza came in, and मैंने कहा यार रानो क्या Shaiza, what did we do, you know, कि हमने world records हो गया, still can't believe it. तो कहती है this was our last match. I think Allah Taala has given us the फल, अल्लाह ने हमको हमारी मेहनत का फल दे दिया. मुझे नहीं लगता हम आगे खेलेंगे. I was like what? अभी की तो world record, like we've just started, you know, you've just evolved as the like height of our like peak of our careers. You've got the record, and वाकई that was it कि अल्लाह ने हमको एक बहुत अच्छे तरीके से नवाज दिया, हमारी मेहनत का हमको सिला दिया. बोला चुप के बैठ जाओ. Consolation जो थी ना हमारी was our world record. So we never played after that. We played international, but we didn't play any series after that. Yeah, we didn't play for Pakistan after that. We played for the MCC and all in England, but उसकी क्या वजह थी? Not for Pakistan. Why was that? देखिए आप इंसाफ करें. हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए. शहरयार खान ने लेटर विड्रॉ कर दिया 3 महीने 4 महीने ओपन, लाइक रिकॉर्ड्स की मेरे ख्याल 2 या 3 महीने की बात है. ठीक है, हमको नेशनल स्टेडियम में बुलाया है शमसा हाशमी. ठीक है, उसने हमको बुलाया है विद अदर गर्ल्स,
कि आके अपने ट्रायल्स देकर होंगी आप तो हम आपको रखेंगे। पहले मुझसे पूछती है आपका नाम क्या है। Like we were called for the trials and we were like ठीक है PCB has got it, हमारी टेंशन उतर गई। हमने कहा चलो ठीक है। हम फिर भी चले गए इनके पास कि ठीक है हमें खेलने से मतलब है ना। We get to be हमारे like we current world record holders जो हम नेशनल स्टेडियम में वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आए हैं। And we were called on the outside वाला जो बाहर वाले इनके नेट्स हैं वहां पर जो ट्रायल्स हो रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के, हम चले गए हेड डाउन करके। वहां पर पता नहीं कितनी सारी टीचर्स तो कौन कौन एक अलग ही लोग जिसे कहते हैं ना वुमेन्स क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी हम भी जाके लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े होते हम लोग बैठ गए थे वहां पे जाके। यानी कि हम लोग वहां चले गए हम लोग। आपका नाम क्या है? वो आके बैठ गए जी आपका नाम बताएं। Ridiculous. आप क्या करती हैं? We even did that. We gave the trials also. हम वहाँ लड़कियों के साथ क्रिकेट भी खेल लेते थे। जी स्प्रिंटें करा रहे हैं। शुगर में हमने वो भी कर लिया। But then जिस तरह से they were trying to जिसे कहते हैं ना कि just because अपनी seats को वो चमका रहे थे और even like when we went out of the stadium we were going back home. So Shaiza Shah, who's like a world record holder, the youngest woman to play a test match, who's got the bowling का world record, 98 runs उसने test match में मारे हुए। वो बाहर खड़ी हुई है स्टेडियम के बाहर waiting for a bus with a kid bag. That's the izzat you give a test player PCB का like you And know. she was rejected. She never played. She rejected. शम्सा हाशमी और ये सारी जो नई नई टीचर्स हैं इनको गाड़ियां मिली हुई हैं, इनके जी लंचेस भी आ रहे हैं बॉक्सेस में and players like साजिदा शाह, like Khurशीद and so many others they were like Even बतूल नैन आपदी वगैरह ये सबको निकाल दिए थे इन्होंने। मैं पीछे से गई हूँ इनको मैंने अंदर डाला है। इनको रिजेक्ट कर दिया था उस दिन। Wow. और सना में उंगुश मुमताज को तो अपना तरीका था अंदर घुसने का वो घुस गई। तो we all know the story. So you see, but उन्होंने टैलेंट नहीं देखता पीसीबी। अभी भी पीसीबी टैलेंट नहीं देखता। It's all you know nepotism वगैरह है इनका। कोई टैलेंट को नहीं देख रहा वहाँ पे। अभी भी इतनी लड़कियां हैं I know I'm aware of who can go and really perform. And when you mentioned that we're going to talk about the अगले match one day. 20 साल के बाद अब जीत रहे मैच। अब मैं किसको जाके पकड़ूं? This should have been done 10 years ago. Yes. Yeah. Yes. You know, I mean, it's too late in the day. That shows they progressed. कि आप कितनी देर में और आप consistently matches के लिए girls have more than 100 one days on their names. उसके बाद आप खेले तो no credit to anybody. Sorry. True. No credit. तो इसमें लड़कियों का कसूर नहीं है। इसमें जो ऑफिशियल्स हैं जो वो बैठे हुए हैं जो जी इनको लगाया हुआ है उनका कसूर है। पीसीबी का सेटअप का कसूर है, nothing more. बिल्कुल and we've हमारी टीम को डेट फर्स्ट 4 में इजीली बहुत टैलेंट है यहाँ पे। अगर उस पॉइंट पे हम लोग बैठ थे यहाँ पे होम सीरीज जीत सकते हैं। When the girls don't know how to play. उसमें हमारी बैटिंग ऐसी होती थी कि शर्मीन ओपन जाओ और इधर से एक दो दूसरी लड़की भेज दो, आखिरी बॉल पे रन ले लेना। और फिर हमने अपनी बैटिंग लाइनअप स्ट्रेच करते थे। 2 लड़की आउट हुई तो एक पे किरण चली गई, फिर मैं चली गई, एक मलिया होती थी। 4 गर्ल्स को क्रिकेट जो बैट पकड़ सकती थी। ठीक है, और वो हम लोग प्लेयर के साथ उसको एडजस्ट करते थे नॉट बैटिंग वाइज कि लाइनअप हमने कैसे पकड़ना, आखिरी बॉल पे रन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, पता ना चले इसको खेलना नहीं आता। इसी उस पे हम लोग जीत सकते हैं नेदरलैंड सीरीज। तो ये अभी इनको विद ऑल द फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड दे कांट डू इट। बिल्कुल एंड आई थिंक वो जो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस हैं वो नज़र आते हैं कि डेफिनेटली टैलेंट है क्योंकि दे एंड अप बीटिंग टीम्स लाइक एज दे हैव न्यूजीलैंड, दे बीट इंडिया अ कपल ऑफ टाइम्स। तो वो कंसिस्टेंसी लेकिन नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। They just need to be polished in the right direction. They need to be इनको कहते हैं ना मोटिवेशन आप दें, एलिवेटेड होना चाहिए इनको। अब कैप्टन को भी कह रहा हो तुम इधर आओ, सिकंदर भी हो तुम इधर आओ, I mean give them respect for God's sake. Yeah, absolutely. और कैप्टन देखो she is out there to play her game, ठीक है ना। अब आपको वो कोच बता रहा है तो उसको खड़ा कर दे, उधर खड़ा कर दे, इधर नहीं आप, तो फिर you are not playing chess out there. ये तो ड्राफ्ट भी नहीं है what you are doing. एक प्लेयर की एबिलिटी को उसके निकलने दो खुद ही। You see, PCB has done a very nasty job. या इसमें आई एम श्योर नो वन इज और इस पॉडकास्ट के बाद तो मोर सो एक मैं आई वाज रीडिंग आयुष बोकन देयर वाज अ पार्ट इन व्हिच ही मेंशन्ड दैट लेफ्टिनेंट जनरल ज़िया ने एक पॉइंट पे आपको ऑफर दी दैट यू नो विल हेल्प यू, विल कवर एवरीथिंग बट आई विल डू द सिलेक्शन। सो आई मीन सॉरी टॉकीज अगेन या so what was that about? Why would he want to personally select the players? ऐसी कोई बात नहीं हुई। He never said I will do selection.
ऐसी बात नहीं हुई थी. वो बात ये हुई थी कि वो था his marketing manager was Zahid Bashir. Okay. ठीक है. तो उसने कहा था आफिया सलाम, if you are aware of her, she's a Yeah, definitely. Yeah. She was supporting us and she was there with us in the meeting. Achha. When Mr. Taqi Ziad said कि I will give you 2 million. Achha. We were going to Ireland and उसको कहा था कि जाहिद बशीर को कि आप किटी में से जब इसको वापस डालें, पेप्सी से बात करो, जिससे भी करो, but give the girls the money. अच्छा, so he was supportive. He was very decent. Okay. He gave us the ground. He helped us out. Yeah. There's no doubt हमारे about day it. night series जो थी और जब हमारे वनडेज थे फ्री ऑफ चार्ज तो किसी साहब ने हमको दिए थे वुमेन्स क्रिकेट को. He was there. He was a thorough gentleman. Yeah. ये जो है जाहिद बशीर साहब जो है इन्होंने कहा कि अच्छा आप लड़कियों को उधर ले आए, रात को क्या उधर ले आए, पर कॉन्टिनेंटल में I want like to meet the girls. I want to meet the girls. नहीं आप उधर ले आए, उधर ले आए. We want to see the first of all your calm is not to see the girls. ठीक है, that's our problem. We are another association. Yeah. You've been told to bloody give us the money, to give us the money. You do that, yeah. उसके बाद we went to Professor Anita Ghulam Ali, and she wrote a letter to General Sahab saying, this is what this gentleman has done. Shame, concludes Nika with a red pen. ठीक है ना, as a minister. So when I came home, my father said, what happened? I said, वो नहीं मिले, वो ऐसी बातें कर रहा है. तो he said कि बेटा तेरे पास 12 बजे से पहले भी नहीं थे, 12 बजे के बाद भी नहीं, तो रोक क्यों रही है? मैं करता हूँ, दफा करो इनको. तो देन वी वेंट अहेड. उस चीज को अगर हम ज्यादा हवा देते उस वक्त तो लड़कियां भी हमारे पास नहीं आती, एंड वी वर स्टिल इन अ वेरी फ्रेजाइल पोजीशन वेयर वी कुड हैव बीन टार्निश्ड और स्कार्ड कि भाई यहाँ पे तो ये होता है. हमने लड़कियों को बहुत संभाल के रखा था. हमारी अपनी बसेस वैन्स थी, अपनी पर्सनल हमारी मेरे साथ घर पे रहती थी, इनके डॉग्स बनवाए थे हम लोगों ने, घर में वो सारी प्रैक्टिस होती थी. तो यू नो और हमारे क्रिकेट ग्राउंड में वो सारा काम होता था. सो द फैमिलीज आर वेरी कंफर्टेबल कि इनको बाहर के यू नो कोई वैसा हार्म नहीं आएगा. तो दैट्स हाउ वी केप्ट गोइंग फॉर 10 years. वाओ. विद अ क्लीन रेपुटेशन. आप कहीं भी देख लें, कभी आपको कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी. Like being a player myself, all the girls like initially when I joined वगैरह obviously उस सब जोड़ी डेविस तो छोटे से उसके लिए आई थी like World Cup के लिए. So we had the male coaches. So all the girls initially when I was also part of just the team, not the management and all. So we were told any male who misbehaves with you, whether he is a reporter, whether he is a even coach आपके साथ किसी भी किस्म का misbehavior or inappropriate behavior है, we had the authority to fire him there and then without my permission, without any girl's permission, and we could just take anybody down जिसने अगर हमसे थोड़ी. So that was the comfort that our parents had कि you know कि यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में obviously we were getting the facilities, we were getting to play for Pakistan वगैरह. अब तो ये ना कि they are all getting paid professional उन्होंने बना दिया है. तो पेरेंट्स भी जीत के आके छोड़ के जा रहे हैं because of उसके लिए. बट उस जमाने में घर से छोड़ के जाना लड़कियों को, क्योंकि हॉकी का कोई उस वक्त था ही नहीं. It was like no future for hockey, या कोई स्पोर्ट ही नहीं थी देखा जाए, ना बैडमिंटन ना टेनिस, like women sports कोई भी नहीं थी ऐसा. It was only the Pakistan women's cricket team which was traveling abroad and international teams आ रही थी. So इस चीज को हश करना पड़ा, but no doubt there were a lot of witnesses to that event जो ये हुआ था before the Island series. Wow. Yeah, I think this has been a really, really great conversation. और ये I think जितने भी हमारे millions of followers हैं बहुत पसंद करेंगे. But moving on, there is one last thing. We have a few questions from our audience, so we wanted to ask you those, and then we can close on that. So one of our fellow podcaster from India, she does a podcast called Never on the Back Foot, has asked what inspired you to take up the game. So you both can answer this one. I don't know when we started, my sister and I, and we were just inclined towards playing it, and we got a chance to play in London as well when we were there for our holidays. तो वो एक चीज चल पड़ी हमारी. मुझे नहीं आज तक, मैंने सोचा भी नहीं, बस वो था, करना था. You know, that's what I just loved the game. That was my thing. Yeah. Nobody inspired me. It was just in me, I guess. Yeah. Okay. I used to play since childhood. Like घर में सब cricket खेलते थे. My father was a first class cricketer and he used to play cricket. My चाचा हर कोई खेलता था, and I was always there playing with them. And my father was very encouraging. And
then me and my brother used to play a lot. So, it was basically my father who taught me sari front foot, back foot, sari cheezein. Before I went for the trials, whatever I knew was taught to me by my father. ये पहली लड़की आई थी उधर नेट्स पे जिसने वाइट कपड़े पहने थे, उसके हाथ में किट थी, अदरवाइज all thanks to my father. He took me specially to the shop to get me a kit and everything, and I think and I told Sharmeen आज टीम बन गई. born to be a cricketer. इनफैक्ट ये आगे भी एक किसी ने सवाल पूछा है कि जो आगे बाकी की जो टीम बनी उसका जो इक्विपमेंट था, ट्रेनिंग का सारा सामान था, उसकी किस तरह से आपने, हाउ डिड यू अरेंज दैट, वेयर वाज दैट कमिंग फ्रॉम? All from Australia because we couldn't get the gloves of their size वगैरह के, spikes आप ऐसे नहीं मिलते थे, pads वगैरह लड़कों के size के ऐसा नहीं मिलते थे, and because Sharmeen and I were using international equipment, we did not expect the girls to wear the local one. I'm going to be very honest. So and हम उसके हाथ में डंडा पकड़ा के नहीं कह सकते आप फौरन मारे, हम खुद ट्रेनिंग कर सकते हैं. So we had to be at par to tell them that please perform. You see, so उस वक्त तो ये सारी चीजें थी, ग्लव्स वगैरह जो कुछ भी था, पैड्स वगैरह सब ऑस्ट्रेलिया से हम लाते थे. शूज, सॉक्स वगैरह, you name it, everything was from Australia. इसमें बीच में मेरा एक सवाल मुझे याद आ गया. I think one person that we've mentioned but not talked about is Sharmeen herself. And she's passed and she's no longer among us. But tell us a bit more about her. I mean, Kiran ne mention kiya hai, her presence. What did that give to the team? What did that naturally give to you? I think she will answer that. She was like the heart of the team, I would say. She was like always up for a challenge. And being a fast bowlers का एक होता है ना कि they are like जुनूनी के अंदर बहुत ज़्यादा, they have a lot of heart in them. And Shaiza के साथ मेरा ये था कि Shaiza was the captain, the president, and थोड़ा सा एक respect और एक थोड़ा सा वो Sharmeen was like जिसे कहते हैं ना the partner in crime I had. She used to be my partner in crime. So, but Sharmeen, like obviously, she had उसका जो vision था, like taking us like so many things जैसे होते हैं ना, especially जैसे हमारे यहाँ पर when we the Netherlands team came, then we launched the magazine को launch करने में launch कैसी होगी, how we gonna make it big, और किस तरीके से टीम को वो करना है, और like she had ideas of she always came up with ideas कि we need to take to the governor house, we need to have PTV, we will have the matches live telecast. So she always had a very bold और जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा bold और उस तरह की उनकी presence और वो थी, and very lively and very jovial and a lot of fun. टीम का सारा जो fun होता था वो Shaiza was like, हम लोग obviously we were like very of her. She had to because she was the captain. But Sharmeen was give us that leverage. Obviously, she knew about it, but वो थी Sharmeen की. We used to sit in the evenings and at times अब हम क्या करें जिससे demonstrated का थोड़ा सा we come up. So it was Sharmeen's idea कि अभी we all three became the members of the MCC in the first year. And we were the only 3 Asians to do that. So she said कि अभी तक MCC नया बना 1 साल हुआ है, इन्होंने कोई international match नहीं खेला. Let's play them and beat them. So we will become the chapter of MCC of women's cricket will start with Pakistan. And that's what happened. So it was her idea and we went there and we beat them. Yeah, I mean on that, do you have any dressing room stories, any crazy stories, any fun stories, or was it just the revolution? हालत टाइट होती थी, कोई स्टोरीज नहीं है, करना है बाहर जाके क्या कहना है, घर जाके क्या बताना. There are no stories. We was looking at each other and we started to reading. Fantastic. कोई नहीं देखता था. Obviously सबकी परफॉर्मेंस ऐसी होती थी कि हम लोग इसलिए नजर छुपा के बस अब टीम मीटिंग हो जाए और बस चुपके से जाके सो जाए, अब नेक्स्ट तो देखी जाएगी वाला. It's like a bad report card. Actually admission तो मिली ना स्कूल में. हाँ, exactly. बिल्कुल. Yeah, definitely. Kiran, this one's for you. So आपने मिथाली राज का record break किया, of course. So did Mithali Raj ever reach out to congratulate you? कभी उनसे बात हुई इस बारे में? नहीं, never. Okay, Kumail, you want to take the last
couple of हाँ questions. ये लास्ट वन थोड़ा लेफ्ट फील्ड तो नहीं है, खैर आई थिंक ये वाली तो हम बात कर चुके हैं. दोनों सवाल एक जैसे ही हैं. डिस्पाइट द एडवर्सिटीज यू फेस्ड, व्हाट मेड यू वांट टू कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा है हाउ डू यू ओवरकम द सोसाइटल टैबूज, व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स. आई थिंक इसको क्लब कर देते हैं टुगेदर. वी हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन हाउ डू यू हैंडल डाउट? आई मीन जब इतना सब कुछ आपके अगेंस्ट स्टैक्ड है, Yeah. आपको आई एम श्योर एट सम पॉइंट यू थॉट टू योर सेल्फ एंड मेनी टाइम्स कि यार छोड़ देते हैं, क्या करना है इतनी ख्वारी करके. To leave was easy. 1 minute decision. When Like we we left in 2004 was easy for us to go but it was 2004 में leave करना was easy because we had the world records, Yeah. but still we were at the peak of our careers and we मुश्किल काम left है. at that time. Yeah. we changed the mentality of this country. Absolutely. क्रिकेट नहीं खेलती, मेंटालिटी हैज बीन चेंज्ड. हर एड टीवी पे बैट पकड़ा हुआ है, ठीक है ना. अब वो जो एक एड आता है चॉकलेट वाला, that ad goes on Kiran because her father took her to buy a bat. Yeah, they took me. Wow. My father took me to a shop to buy a bat, and they were like, "Okay, बलोच साहब आप आए हैं, हाँ बेटी को किट दिलानी है, इसके कल ट्रायल्स हैं." So you know, it takes us back then कि जब ये वाकई एक टैबू था, and how far it has come. That is our achievement. Like all credit goes to Shaiza because when I started playing cricket, like in 1996, ये इनका मैच था मई में, वुमेन्स क्रिकेट वर्सेस द वेटरन्स क्रिकेट का था, जिसपे बहुत बड़ा वो हो गया था कि जी मैच कैंसिल हो गया, जमात इस्लामी हो गया एंड ऑल दैट थिंग. मुझे पता चला मैच कैंसिल है. आई डिड नॉट गो. उस वक्त मेरे आई थिंक आई वाज स्टडीइंग इंटर में थी और समथिंग, तो आई डिड नॉट फॉलो इट अप बिकॉज ऑफ सम एग्जाम्स वगैरह के मैच विल बी प्लेड अगेंस्ट वुमेन. तो मी एंड माय फादर हैड डिसाइडेड कि मैच होगा, वी विल गो टू द स्टेडियम. मैं तो बस पाँव पड़ जाऊंगी कि मेरे ट्रायल्स दो एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम. सो वो कैंसिल हो गया. सो देन इट टुक मी लाइक फ्रॉम मे, it took me like so many October tak, it took me till that much time to locate them, to plead to them that I want to play cricket, I want to be a part of the team. And I was sitting there, Australia और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था women's का. उस जमाने में डिश होती थी, डिश पे मैं देख रही थी women's cricket का मैच. they were playing in skirts उस टाइम पे. So I was just thinking कि पता नहीं मेरी जिंदगी में मुझे क्रिकेट खेलने, because I used to play at home, घर में मोहल्ले में कजन्स के साथ खेल लिया. So just sitting there and thinking कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कभी क्रिकेट मुझे ऐसी देखने को मिलेगी, हमारा मुल्क कैसे होगा कि नहीं. Yeah. And after a short while, शाइजा का उसमें फिर से आया for the trials. And to be honest, for me to realize like my dream come true to play for Pakistan and represent Pakistan abroad, in Pakistan, playing at the national stadium and so many meetings, so many achievements जो 10 साल में रही है women's cricket की, being a part of that has only been possible because Shaiza and Sharmeen did not listen to the people who were against them so much. And my parents stood behind us. Yes. Yeah. Thank you so much, guys, for coming on this. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. It is Thank you for having us. नहीं, it is so refreshing to have talked to you, and I think कि इतनी ज़्यादा चीज़ें perspective में आ जाती हैं, and we definitely send you once this gets published. And we'd love to keep in touch, and we'd love to have this conversation again. Sure. So thank you so much for taking out the time. Yeah, I Shaiza. think this has also been one of my favorite episodes so far that we've recorded in the last 2 years. So I've loved talking to you, and it was an honor for the both of us Yes, to definitely. host you. Thank you so much. And, thank you for having us. And we usually don't give interviews, but Yes. because we have heard about you and Ayush was very keen Yes. that I mean I think he had given you an interview. Yes. Yeah. So we Yes. were like, Yeah. we liked that and we said okay, we will do this. Yeah. So No, thank you so much. It's a pleasure is all ours. Thank you All so right. much. Thank you, and thank you everybody who's watching. Like, share, and subscribe. We'll end here.